Our guest speaker is about to join us, Dr. Usha Arora Madam. So as soon as she will join, we'll start with our program.
Very good evening to one and all present here. We are waiting for the resource person to join. Shortly, we will start our program. Till the ma'am is joining, let's take a brief outlook about this program. The program on exploring dynamics of National Education Policy 2020 with reference to NEC perspective. We are organizing 7 days the faculty development program on different criteria of NAAC. And today we will be discussing about the criteria, teaching, learning, and evaluation. And our guest speaker will be Dr. Usha Arora ma'am. And after that, on the third day of FDP, we will be having criteria 3, that is research consultancy and extension services. For the same, we will be having our expert is Dr. Vasudev Malhotra sir. On the fourth day of the snack oriented program, FDP, we will be having a criteria for discussion, that is on the infrastructure and learning resources. And the guest speaker would be Dr. Murli Krishnan TR. He is the professor, Department of English, Sri Shankaracharya University of Sanskrit. On day 5th of this FDP program, we will be having criteria 5, that is student support and preparation, which would be taken by Dr. Jignesh Taparia sir. He is the associate professor in psychology, Mahatma Gandhi Labour Institute, Driving Road, Ahmedabad. On day 6, we will get to know about the criteria 6, that is government leadership and management. The expert for that will be Dr. Mahendra Singh Rathore. And on day 7, we will be having innovation and best practices related discussion and lecture by Dr. Rupesh Shukla sir. He is the senior expert member and IQAC coordinator, Shri Cloth Market, Girls Commerce College, Indore, Madhya Pradesh. Our resource person has joined. Now we will officially start this program. Greetings to one and all present here. I, Professor Shazia Khan, on behalf of Sant Hirdaram Girls College, Bhopal, welcome all the respected dignitaries, esteemed resource person, and the faculty members in the day 2 of 7 days faculty development program on exploring dynamics of National Education Policy 2020 with reference to NAAC perspective, organized by
Internal Quality Assurance Cells, Sant Hirdaram Girls College, in association with Research Foundation of India. Today, we will be having session on NAAC Assessment Criteria 2, that is Teaching, Learning and Evaluation. For the same, we are having with us Dr. Usha Arora ma'am. She is the Professor and Dean, Haryana School of Business, Guru Jambeshwar University of Science and Technology, Hisar, Haryana. She is having more than 35 years of teaching experience and administrative experience as Dean, Director, Coordinator, Chairperson at Guru Jambeshwar University of Science and Technology, Hisar, Haryana. She is the recipient of Bharat Jyoti Award by India International Friendship Society, New Delhi in 2012, Best Citizen of India Award by Best Citizen Award Publishing House, New Delhi in 2012, Best Professor in Marketing Management by Dainik Bhaskar National Education Leadership Award, Mumbai in 2013, Bharat Gaurav Award by India International Friendship Society, New Delhi in 2016, Best Citizen of India Award by International Publishing House in 2017. She is the member of editorial board of journals like Advent Group of Journals, Madhya Pradesh, Indore, Galaxy Global Group of Institutions, Management Review, Haryana. She has been editor-in-chief and managing editor for HSB Research Review Journal of Haryana School of Business, International Journal of Productivity Management and Assessment Technologies, and official publication of the Information Resource Management Association, Hershey, Pennsylvania, USA. Asia Pacific Who's Who, New Delhi, South Asian Journal of Multidisciplinary Studies, UGC approved international journal. She has successfully headed research projects funded by UGC, published more than 100 research papers in reputed national and international journals. She has published more than 9 books. 13 candidates have been awarded PhD degree under her supervision, and presently 9 students are pursuing PhD under her guidance. She has guided more than 150 research projects and dissertation for MBA degrees. She has been invited as guest of honor, keynote speaker, chief guest on various national and international conferences, seminars, symposiums, etc. She is the member of All India Management Association, New Delhi, member of All India Commerce Association, member of Major Research Project Allocation and Evaluation Community, UGC, New Delhi, member coordinator, NEP Peer Team, UGC, Bangalore, member UGC Expert Committee for the Review of Institutions deemed to be universities, etc. It's my privilege to invite Dr. Usha Arora ma'am as today's speaker. I welcome you, ma'am, to start the session. Ma'am, please. Thank you. Thank you, Sazia Khan. I hope the PPT is visible now. Yes, ma'am, it's visible. Okay. So it's my next. It's my proud privilege to participate as a resource person in this 9 days faculty development program organized by Sant Hirdaram Girls College, Bhopal and Research Foundation of India. It's really a pleasure, honor, pride for me to have an interaction with this august gathering and the faculty members of all around the country from universities, colleges and institutions. I'm thankful to Professor Rajesh Vyasji, Principal, Christian Eminent Academy, Indore, Professor Ajay Jainji, and the Principal of Hirdaram Girls College, Bhopal. So, a very good evening to one and all who joined this program on NAAC Accreditation Program, Faculty Development Program on exploring dynamics of NEP, National Education Policy 2020 with reference to NAAC perspective. So, in the light of this quote, first of all, I hope that
this FDP will definitely serve the purpose for which it is framed. I'll be sharing my personal experience. I'm not going to discuss about the bookish things or the theoretical things, because I am having a long-term relationship with the NAAC and having my personal experiences. So better, I would love to share with you all my experiences as a member coordinator in peer team also, how we have to start the preparation. However, my focus will be on the criterion 2. But just to link the things, I have to start from the beginning also, but the ultimate focus will be on criterion 2, but in the light of the National Education Policy 2020. So, however, it's not possible for me to discuss the NEP 2020 in detail, but I have explored 5 or 6 points major in NEP, which is more relevant to the NAAC also, and which is relevant to the NAAC in perspective or in relation to the second criterion also. Knowledge is like a tree. It flowers as much as it provides shade, and the fruits it bears are the sweetest if shares. So in the light of this statement, let me explain the NAAC accreditation framework. In between, wherever I will feel, I will share with you the NEP main guidelines also. NAAC, these are not now, it's an old slide, so I could not rectify. Now these are not new guidelines. These are revised in 2017 and applicable in July 2017. Earlier, the old criteria was there, and there is a difference between the old criterion accreditation and the latest one, which is applicable in today's environment also. So these are the revised guidelines. The SSR, we are going to divide the whole activities of NAAC accreditation in 3 parts. Preparations for applying means you are preparing your SSR, self-study report. And second activities we are going to cover under the monitoring or the follow-up. And the third is visit of NAAC peer team. So one by one, first of all, we'll have to discuss how we have to prepare our best SSR and to apply for NAAC accreditation. In your SSR, there are 4 sections. First is general information. Under the general information, we have to give general information about the institution, about the college, about the university, its year of establishment, number of programs they are running, departments or permanent faculty member, permanent support staff, students. And the major thing which is going to be covered under general information is also that which NAAC has to highlight, the peer team has to highlight, is the 3 major criteria where the institution stands for its best. मतलब ये तैयारी संस्था को भी करनी है, यूनिवर्सिटी को भी करनी है. Generally, it's the work of the peer team members to highlight the 3 major criteria, 3 major features of the college, best features of the college. But generally, NAAC peer team, they ask from you people also as a university or as a college or the institution कि आपके हिसाब से आप अपने आप को किन criterion में best मानते हो. Best means you are the unique in that criteria. No other institution has that things or that special feature which you have. So second, criterion wise analysis. Criterion wise analysis, I'll discuss 7 criteria NAAC has defined. And all the criterion are beautifully related with each other. I will discuss with you. Section 3, overall analysis based on institutional strengths, weakness, opportunities, and challenges. Mean earlier it was SWOT analysis. T was threat, but now instead of T, threat has been replaced by challenges, SWOT. And the 4th one is recommendations for quality enhancement of the institution. So first of all, in SSR, executive summary has to be framed. Executive summary, under the executive summary, first of all, the introduction about the institution. Then strengths, weakness, opportunities, and challenges of the institution. Then criteria-wise analysis. Here, the criteria-wise analysis is done in brief, in detail later on. So,
I personally found that here the criteria wise summary which is given under the briefs executive summary is somewhat different, and the criteria wise analysis is done in the later stage which is different. So this seems to be that the people are not serious in applying for NAAC. So that should be the similar. Even the number of the teachers, permanent teachers in the institution shows somewhere it is 118, somewhere it is 116, somewhere it is different. So it should not be there. That gives a wrong impression. That shows that casual attitude. So criteria wise brief summary should match with the inside detailed information which you are giving in the SSR. Next is profile. Profile, basic information and then academic information. Next is extended profile. Extended profile means program, about the programs, how many programs you are running, kitna students hai, everything should be given there. Performa is there. In NAAC portal, NAAC website, you will see students, about the teachers, and about the institution. Before going to start with this, I would love to share with you a few things that NAAC, when an institution decides to apply for NAAC, what they start going on, क्या करना शुरू कर देते हैं? They start to generating paper, documents, ये वो. NAAC मांगता है, no doubt. When you are applying your SSR, you are uploading SSR to the NAAC website, you have to support everything, whatever you are claiming with some supporting documents, no doubt. ऐसे तो बात नहीं होती, कोर्ट में भी हम बात करें, कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में ऐसे फैसला तो नहीं होता कि इसको सजा दी जाए कि नहीं दी जाए. क्या होता है, आपके सामने सबूत मांगे जाते हैं. तो सेम happens with the NAAC also. NAAC asks the supporting documents. If you are not going to attach the supporting document, whatever you are claiming in your SSR, आपके नंबर वहीं काट लिए जाएंगे, because now the criteria has been changed. Earlier the total 100% was in the hands of the peer team. Now it's 70-30. 30 in the hands of the peer team members. However, the peer team member report is also very that matters a lot also. I'll discuss with you कि how matters that. तो आप जब SSR में जो कुछ क्लेम कर रहे हैं कि हमने इतना सेमिनार किया, हमने इतनी दफा अपना सिलेबस रिवाइज किया, तो आप अपनी बोर्ड ऑफ स्टडीज की जो मिनट्स हैं वो एवरी टाइम यू हैव टू अटैच विद द SSR. अदरवाइज NAAC आपसे पूछेगा नहीं, NAAC तो सीधा आपके नंबर काट लेगा और आपकी रिवाइज जो SSR होगी ना वो अपलोड कर दी जाएगी. आपको लगेगा अरे हमने तो कुछ और कहा था, NAAC ने कुछ और कर दिया. तो NAAC हैज द राइट टू रिवाइज, है ना. तो आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली. तो जब देखा कि किसी ने NAAC के लिए अप्लाई करना है, इवन इंस्टीट्यूशंस आर कॉलिंग मी आल्सो कि NAAC के लिए अप्लाई करना, कौन से डॉक्यूमेंट्स, इट्स ओके. आई डू एग्री विद यू बिकॉज आई एम द पार्ट ऑफ दिस सिस्टम आल्सो. पीपल स्टार्ट प्रिपेयरिंग द डॉक्यूमेंट्स एंड पीपल focus on digit, people focus on number. हमने 100 सेमिनार किया, हमने ये किया, हमने वो किया. अरे भाई, नंबर इज नॉट इम्पोर्टेंट. NAAC का बेसिक ऑब्जेक्टिव जो था टू जनरेट क्वालिटी, टू प्रोपेगेट क्वालिटी, टू गाइड द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस टू द पाथ ऑफ सक्सेस. क्वालिटी प्रोवाइड करो स्टूडेंट्स को, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करो. Gone are the days when we say कि मुझे तो जो आता है मैं तो वही पढ़ाऊंगी. नहीं, नाउ द स्टूडेंट्स आर वेरी स्मार्ट, दे आर वेरी डिमांडिंग. सो यू कांट से कि मुझे तो जो आता है, ऐसा नहीं चलेगा. आपको यू हैव टू एज ए टीचर्स वी हैव टू अपडेट आवरसेल्व्स एवरी टाइम. यही NEP 2020 में कहा गया है कि टीचर्स का अपडेशन. NEP 2020 की बेसिक चीजें मैं आपसे शेयर करती हूँ. इन द लाइट ऑफ दैट आई विल डिस्कस द सेकंड क्राइटेरियन आल्सो. Multiple entry, multiple exit. That's explained in NEP. कि मल्टीपल लेवल पर 3 months के बाद भी अगर कोई एग्जिट करना चाहे तो आप उसको सर्टिफिकेट दे देंगे. 1 साल के बाद कोई एग्जिट करना चाहेगा तो आप उसको डिप्लोमा दे देंगे. और यदि 2 years के बाद करेंगे तो उसको PG की डिग्री दी जाएगी, वगैरह वगैरह. लाइक दिस में मल्टीपल लेवल एंट्री एंड मल्टीपल लेवल एग्जिट आल्सो. यू कैन enroll yourself in the second year of PG program also, or the second year in the UG program also. That says under the NEP 2020. तो मेरे ख्याल से कल जिनका टर्न हुई होगी, क्योंकि प्लानिंग, करिकुलम प्लानिंग का क्राइटेरियन 1 था, that has been covered under that
an NEP part also there. Learning process का आज हम करेंगे. और NEP 2020 की next जो specific बात है that we have to include under this criterion, NAAC criterion accreditation, that is credit transfer. अब आप देखेंगे कि NEP पे तो सेपरेट ही बहुत सारे कितने सेमिनार और प्रोग्राम हो रहे हैं, बिकॉज इट्स न्यू इन नेचर. So when we are going to implement, each and everything should be clear in our mind कि हम क्रेडिट ट्रांसफर कैसे करेंगे. अगर एक बच्चा सेकंड ईयर में आ रहा है तो उसके फर्स्ट ईयर के क्रेडिट्स जिस इंस्टीट्यूशन से वो करके आया है उसको हमने कैसे ट्रांसफर करने, कैसे काउंट करने हैं, उसने वहां क्या प्रोग्राम, क्या कोर्स किए हैं, फर्स्ट ईयर में क्या क्या कोर्सेज वो करके आया है और हमने कौन से कोर्सेज करवाए हैं फर्स्ट ईयर में, तो कौन सा कोर्स उसको और ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, फिर कैसे क्रेडिट ट्रांसफर करेंगे. दैट कवर्स अंडर द NEP. And the third thing under the NEP says, और वही हमारे सेकंड क्राइटेरियन के अंदर अभी मैं बात भी करूंगी आपसे डिटेल के अंदर, जो बज वर्ड्स हैं, these are very popular nowadays. Value based education, quality based education, skill, ethics, professionalism, it's all covered under NEP 2020. And NAAC also says the same thing. Value based education, skill, ethics, professionalism, gender equity, sustainability, environment consciousness, पहले criterion के अंदर this has been covered under this. So these are the popular words which are used in NEP 2020, and NAAC also focuses on the same thing. I recall the words Swami Vivekananda ji, a long back, a spiritual leader, once he said that India needs to be self-reliant, आत्मनिर्भर भारत. तब उन्होंने कही थी, देखिए हम देखें पुरानी बातें ही आज हमारी एप्लीकेबल हो रही है, नेक के अंदर भी पुरानी बातें आ रही हैं. I'll tell you how. तब विवेकानंद जी ने कहा था सेल्फ रिलायंट भारत, आत्मनिर्भर, और आज हमारे भारत के अंदर भी तो यही अभियान है, आत्मनिर्भर भारत. और आपकी NEP 2020 जो है वो भी आत्मनिर्भर भारत की ही बात करती है कि बच्चों को हमने आत्मनिर्भर बनाना है. I'll come on the criterion second when I will talk to you regarding outcome based education, because it is the time of outcome based education. This is very important. और आत्मनिर्भर हम तभी हो पाएंगे, पूरा देश आत्मनिर्भर तभी हो पाएगा when a teacher is आत्मनिर्भर, self reliant, and the higher education responsibility जो है वो बहुत बढ़ गई है. NAAC के केस में, NEP के केस के अंदर, if I remember, कोठारी कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी उसके प्रेम्बल के फर्स्ट लाइंस में यही लिखा हुआ था, फ्यूचर ऑफ इंडिया इज शेप्ड इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन. सो यू जस्ट इमेजिन, जस्ट सी द रोल ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हाउ इंपॉर्टेंट रोल. टीचर्स जनरली कहते हैं कि हमें कोई और प्रोफेशन मिला नहीं, हमें कोई और मिला नहीं, तो हम टीचिंग लाइन में आ गए. बट आई डोंट एग्री विद यू. टीचिंग प्रोफेशन इज such a respectable job. It is respectable only if we deserve respect. अदरवाइज तो टीचिंग का कोई, आप टीचिंग को अंदर सरवाइव, आज के सिनेरियो के अंदर सरवाइव करना नॉट पॉसिबल. टीचर ही जो है दे विल शेप द फ्यूचर. मतलब देखें कि हमारी कितनी जिम्मेदारी है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की कि इंडिया का फ्यूचर जो बनाने जा रहे हैं हम हैं. नेशन की बात अभी जो करते हैं हम लोग कि हर घर में तिरंगा हो, हाथ में तिरंगा हो, तब हम नेशन की बात करते हैं. और नेशन की बात भी तभी हो पाएगी, वो कौन क्रिएट करेगा बच्चों के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. सो द रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज बिकमिंग डे बाय डे वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए खैर, आई एम लिविंग दिस बिकॉज I'm coming to my point. So criterion wise different weightage, the three types of the higher educations are given by the NAAC are, just see, universities के केस में this is the criteria, autonomous institutions का ये, और UG affiliated college and then PG. So you will see the research mere focus 250 in the university, however it is less in the autonomous and the colleges UG and PG because there is a less focus on the. So NAAC has beautifully framed all the. Now let us see the indicators and the quality metrics. In between I'll discuss the NEP also. First part is curricular. Just to make the linkages between these 7, I will take only 2-3 minutes. Otherwise my main focus will be on teaching, learning and evaluation process. First criterion was curriculum planning and implementation. So when we say we are planning our curriculum, here institution
ensures effective curriculum delivery through a well-planned and documented process, and you have to attach that document with your SSR. जनरली ये कह देना कि हमने ये किया. You have to explain the process कि हम कैसे करते हैं. पहले स्टाफ काउंसिल में आता है, जब कोई प्लान करना होता है, नया प्रोग्राम शुरू करना होता है. हमने एक बात आप और ध्यान रखिएगा प्लीज, सबसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, those persons who have joined, faculty members, program and courses, these are two different terms. Please replace मत करिए. Program is a whole, MBA is a program, but MBA के अंदर जो different courses पढ़ाए जा रहे हैं, पेपर पढ़ाए जा रहे हैं, that is called by course. So उनको चेंज मत करिएगा. So if your MBA प्रोग्राम है और आप नया प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, तो आप इसकी प्लानिंग कैसे करते हैं, फीडबैक लेते हैं, बिकॉज देयर आर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इन एनी इंस्टीट्यूशन. वो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स कौन है? बिकॉज किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर देयर आर डिफरेंट स्टेक, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स, supporting staff, administration, and the society. They all are the stakeholders. So you can take the feedback, but you have to show it. Document जरूर लगाएंगे आप. And the institution has to ensure effective curriculum delivery. Now you have to attach a document which reflects that curriculum जो design हुआ था, जिस spirit में हुआ था, उसे deliver किया गया. Deliver के time which pedagogies you people have used. जनरली जब हम कॉलेजेस की विजिट में जाते हैं तो कॉलेजेस कहते हैं अरे प्लानिंग बनाना, करिकुलम डिजाइन करना तो हमारा काम नहीं ना, करिकुलम जो यूनिवर्सिटी ने डिजाइन किया, हमारे पास क्या फ्लेक्सिबिलिटी है, वो तो उन्होंने ही बना के दे दिया. नो, आई डोंट एग्री विद दैट, बिकॉज इफेक्टिव डिलीवरी, वही एक चैप्टर कोई एक टीचर पढ़ाता है और एक दूसरा टीचर पढ़ाता है. देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज टू. सो व्हिच पेडागोजीज यू आर यूजिंग, केस स्टडीज, रोल प्ले, GD, interviews, field work, वगैरह वगैरह, project work, number of activities you can include to deliver your course curriculum effectively. So that is in your hand. How effectively you are going to deliver. So you have to attach that. The institution adheres the academic calendar of continuous internal evaluation, academic flexibility, curriculum enrichment. Curriculum enrichment, you can enrich your curriculum. That is in the hand of the college. Curriculum university ने बना दिया, पर उसको आप enrich कर सकते हैं. Institution integrates cross-cutting issues like ethics, gender, human values, sustainability into the curriculum, वगैरह वगैरह. And next, my point is teaching, learning, and evaluation. I'm going to correlate all these points just for your. You will see that teaching, learning, and evaluation, this is the most important part. Research के बाद यदि कोई most important है तो that is second. And particularly in the autonomous institution, UG and PG affiliated college, more marks is given on teaching, learning, and evaluation. Just see that teaching and learning. Why this is very, very, very important? Because the thing is that how you are going to teach your students, how they are learning, and how you are going to evaluate. These three things are going to be covered under the second. I'll take it in detail. Third is research. We know that teaching and research, these are the two words of the same coin. जब तक हम रिसर्च नहीं करेंगे, इनोवेशंस नहीं करेंगे, एक्सटेंशंस नहीं करेंगे, टीचर्स कांट बी अपडेटेड देमसेल्व्स. और जब तक टीचर्स अपडेट नहीं होंगे, हाउ दे कैन टीच द स्टूडेंट्स? बिकॉज द टीच स्टूडेंट्स nowadays are, they are very smart, they are very demanding. We have to come up to the expectation level of the students. Next comes the infrastructure and the learning resources. Just see, learning resources are, this is supporting to teaching, supporting to research. What are the infrastructure and the learning resources institution have? So focus is given on this point also. Next comes student support and progression. Student support and progression में आपका student का progression क्या है? Progression towards higher education, progression towards placement, progression towards the self-entrepreneurship. So institution must possess the database of this. Generally, I personally found कि ये database students institutions के पास नहीं होता है. You must possess all the database. Database नहीं होगा
तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपका स्टूडेंट, यू हैव टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट्स, कितनों ने नेट क्लियर किया, कितनों ने जीआरएफ बच्चों ने क्लियर किया, कितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर गए, कितने हायर एजुकेशन के अंदर पीजी के अंदर गए, कितने स्टूडेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करके गए, कितने बच्चों की प्लेसमेंट कैंपस के थ्रू हुई। ऑल डेटाबेस नीड्स टू बी रिक्वायर्ड, दिस इज द आउटकम। आप देखेंगे पहले करिकुलम डिजाइन हुआ, फिर उसको हमने डिलीवर किया करिकुलम लर्निंग के थ्रू, फिर रिसर्च, देन इंफ्रास्ट्रक्चर, देन स्टूडेंट प्रोग्रेशन and support. This is the outcome of all these 4 parameters. Next is governance, leadership and management. That also matters a lot. What type of governance, leadership and the management. So institutional values, and finally the best practices that differentiate your institution with the other institution. Generally, when I ask a very simple question, generally the institutions also ask, I also asked a few years back, कि वाई नेक, क्या जरूरत है नेक की जरूरत क्या है। तो भाई आई शेयर विद यू दैट समटाइम्स हम लोगों को एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि वी आर द बेस्ट, वी आर द बेस्ट, हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं, आवर इंस्टीट्यूशन इज एट द टॉप लेवल। नो, until and unless you compare yourself, your institution with other institutions, you can't say that you are the best. Comparison is the right way when you can claim that. अगर मैं कहूँ उषा अरोड़ा सबसे अच्छी है, उषा अरोड़ा कैसे अच्छी है भाई? If I say सीता के 60% आए, उषा अरोड़ा के 80% आए, only then I can claim ना कि I am better than सीता, I am better than other my rivalry institution, I am better. Even आज की डेट में तो जब स्टूडेंट्स एडमिशंस ढूंढते हैं, when they want to take admissions in various institutions, तो वो बहुत सर्च करते हैं, they go for a lot of searching here and there about the institution. इंस्टीट्यूशन के बारे में सब कुछ पता करते हैं, और जब इंस्टीट्यूशंस के बारे में पता करते हैं तो this is also one of the A grade, this is NAAC A++, this is NAAC A. So this is also the criteria which distinguishes your institution with your rivalry institution, which tells the people about your institution where you stand. So that's why there is a need. One more thing, I generally make the comparison of NAAC accreditation with the bride. आप सब लोगों ने देखा होगा जब हमारे यहाँ शादी फिक्स होती है लड़कियों की, तो जो ब्राइड होती है उसकी हम बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं, बहुत बढ़िया तैयारी करते हैं। इवन पहले प्री मेकअप, प्री तैयारियां जिसको हम कहते हैं शादी से पहले की तैयारियां, है ना, प्री फेशियल, ये वो सब तैयारी। फिर ड्यूरिंग मैरिज तो उसमें हम कितना मैचिंग देखते हैं, क्या क्या मैचिंग नहीं देखते। उस बच्चे की, लड़की की, जो ब्राइड की है, ड्रेस होनी चाहिए, उसकी ज्वेलरी होनी चाहिए, सेम होना चाहिए, उसका मेकअप फिर सेम होना चाहिए, उसका फुटवियर्स होना चाहिए। व्हाई वी आर गोइंग टू मैच ऑल द थिंग्स? व्हाई देयर इज अ नीड टू? क्योंकि वो भद्दा लगेगा। तो सेम NAAC here, I generally give the example that same is going to happen with the NAAC accreditation. NAAC के अंदर all these 7 criteria, how beautifully they are linked with each other. एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, पांचवा छठे के साथ। तो भाई आपने भी अपने कॉलेज की, अपने इंस्टीट्यूशन की अगर accreditation करवानी है तो एक दुल्हन की तरह you have to take care of your institutions. और तैयारी में वही लगना है NAAC की पीयर टीम। एक बात ध्यान रखिए, जो पीयर टीम आती, क्योंकि हमने टोटल एक्टिविटीज को वी आर गोइंग टू डिवाइड इनटू 3 कैटेगरीज। SSR प्रिपरेशन, SSR प्रिपरेशंस के अंदर आप डॉक्यूमेंट जरूर अटैच करिएगा और फिर फॉलो अप करिएगा। वन मोर थिंग, कई जगह NAAC जो है वो कहता है कि कम से कम 3 months का होगा तो इसको हम एड ऑन वैल्यू प्रोग्राम मानेंगे, एड ऑन वैल्यू कोर्स मानेंगे। आपके पास यदि 3 months का नहीं भी है तो भी आप टेक्स्ट जब करते हैं ना, उस टेक्स्ट में लिख दीजिए 7 days सेमिनार और 2 days सेमिनार वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन जेंडर इक्विटी, है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे हमने प्रोग्राम किया। वहां नहीं भी होगा तो 2 days का, 3 days का और 7 days का, whatever you are having, you attach that, because जो NAAC peer team आती है, that focuses on that also, है ना। I would love to share with you my report also. बहुत सारी हमने रिपोर्ट्स आप मैं अजय जैन जी को भेजूंगी, तो you see how the NAAC peer team also plays a very important role when they highlight in their report कि इन्होंने 7 days का किया, इन्होंने 6 days का जो किया एड ऑन वैल्यू कोर्स, so you attach that. Now peer team जब आती है उस समय हमने क्या ध्यान रखने हैं, I'll come to that on later on. My focus, because
I have to cover first of all the teaching, learning and evaluation. Under the teaching, learning and evaluation, what type of information we have to provide? First is student enrollment and profile. Under this, we have to attach a document average. What is average? Enrollment percentage. Average of last 5 years. कितने students ने, कितने बच्चों ने आपके पास enroll किया? Because this reflects the institution demand ratio or the goodwill. कितने लोग, how much your institution is in demand. Number of students admitted year-wise during the last 5 years. Again, attachment, the document, supporting document. Number of sanctioned seats year-wise during the last 5 years. Average percentage of seats filled against reserved categories, SC, ST, OBC, Divyanjan, etc. during the last 5 years. So, table-wise, you have to give the data in the prescribed format and the link also to be given along with the proof. Number of actual students admitted from the reserved category year-wise during the last 5 years. You have to give information like this way in the student enrollment. Next, catering to student diversity. Generally, there is a question asked by the institution during my PhD visit. Diversity means what? Diversity includes so many things. Diversity reflects that first is gender. You have to cover both. कितना गर्ल्स का रेशो है, कितना बॉयज का रेशो है. स्टेट्स, आपका अपनी स्टेट से कितना बच्चा है, अदर स्टेट से कितना बच्चा है, इंटरनेशनल लेवल पे कितना बच्चा है, कितना स्टूडेंट्स आपके यहाँ enrolled है, admitted है. That is also diversity. Diversity also includes different caste, different category of like SC, ST, OBC. This is also diversity. And diversity also includes low-level students and high-level, slow learners or the high learner. So diversity, narrow mat kariye diversity terms ko. Diversity is a big term. So under the diversity, you can include all the things. कि कितना आपका male-female ratio है, कितना आपके पास इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है, कितना आपके पास नेशनल स्टूडेंट्स है, कितना आपके पास स्टूडेंट्स है, कितना आपके पास लोकल स्टूडेंट्स है, ओबीसी, एससी कैटेगरी. So that covers under the diversity. Next, under the diversity, that's why it's asked, institution assesses the learning level of the student. If yes or not, क्या आप अपनी संस्था में जब बच्चा एडमिशन लेता है, आप ओरिएंटेशन करते हैं, तो यू अटैच ए प्रूफ ऑफ दैट ओरिएंटेशन. नहीं करते तो करना शुरू कर दीजिए. ओरिएंटेशन करिए. ओरिएंटेशन के अंदर बच्चों को आपको अपने इंस्टीट्यूशन के बारे में आप 1 वीक का कर सकते हैं. एनबीए के अंदर तो आजकल एआईसीटी तो 1 वीक पे फोकस करती है, 15 डेज पे फोकस करती है. और मैं आपको बताना चाहूंगी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वो ओरिएंटेशन पे बहुत ज्यादा फोकस करती है कि ओरिएंटेशन ऐसा जबरदस्त होना चाहिए बच्चे का आते ही एडमिशन, बाकी की स्टडीज बाद में होगी. तो ओरिएंटेशन करिए. आप देख लीजिए कितने दिनों का आप करना चाहते हैं. ओरिएंटेशन में आर यू गोइंग टू असेस the levels of students, that there are some slow levels learners and some advanced level learners? If yes, do you design some separate program for this, separate courses for this? Suppose I take that, because I am professor of management, I take the example, some students in my MBA program take admission having the non-commerce background. Commerce background नहीं है, उन्होंने accounts नहीं पढ़ा हुआ, उन्होंने statistics नहीं पढ़ा हुआ है, because MBA is a professional program where science people, arts people or any stream people, they can take the admissions. So then we give them 15 days. हम एक bridge course work करवाते हैं जिसमें हम लोग कुछ घंटों का हमने प्रोग्राम डिजाइन किया हुआ है कि अकाउंटेंसी इतना पढ़ाएंगे, स्टैटिस्टिक्स इतना पढ़ाएंगे, या बच्चे ने जो प्रोग्राम पहले नहीं किया हुआ है उसको कैसे हमने 15 डेज के अंदर कवर करना है. So is there any, so NAAC give focus on this कि do you सेपरेट सच टाइप ऑफ द स्टूडेंट्स. एडवांस लर्नर्स के लिए फिर क्या करते हो? स्लो लर्नर्स के लिए ये प्रोग्राम है. तो एडवांस लर्नर्स के लिए क्या करते हो? एडवांस लर्नर्स के लिए यू गिव मोर फोकस ऑन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, यू गिव मोर फोकस ऑन सेमिनार, ऑन कॉन्फ्रेंसेस, ऑन वर्कशॉप. दोनों के लिए सेपरेट. अब जनरली क्या करते हैं इंस्टीट्यूशन, क्लेम करते हैं, है ना, एसएसआर हम पढ़ के जाते हैं तो लिख के देते हैं, बिकॉज आई एम टॉकिंग प्रैक्टिकल. बुकिश और थ्योरेटिकल बात नहीं कर रही मैं.
तो उसमें लिख देते हैं जनरली, yes we do it, but when we visit the institution we ask them to provide, मैं तो जनरली जाते कहती provide them me the timetable for this. Is there any timetable? When we ask about the timetable, then they keep their mouth. No. Timetable नहीं बनाया तो how can we convince? How can you convince us that we are providing different type of the programs for the advanced learners and the slow learners? So timetable बनाइए उनके लिए. Timetable आप 0 period में बना सकते हो, after the evening बना सकते हो, lunch time में बना सकते हो, पर बनाइएगा जरूर. अब जनरली मेंटर मेंटी के लिए भी क्लेम करते हैं सभी की मेंटर मेंटी आपके यहाँ है, तो दे से यस वी आर फॉलोइंग द मेंटर मेंटी रिलेशनशिप. देन वी आस्क कि मेंटर मेंटी की क्लास कब लगती है, वीक में कितनी बार होता है, कितने लोगों की काउंसलिंग हुई, मेंटर कितने हैं. तो यू हैव टू कीप द रिकॉर्ड, रजिस्टर्स ऑनलाइन और ऑफलाइन, यू हैव टू कीप ऑल द रिकॉर्ड्स कि इस टीचर के अंडर 10 स्टूडेंट्स है, इस टीचर के अंडर 10 है, वो 0 पीरियड में आते हैं, ये स्लॉट हमने मेंटर मेंटी के लिए रखा हुआ है. और आपसे भी पूछा जाएगा क्या कभी कोई बच्चे ने कभी काउंसलिंग करने आए, किस टाइप की काउंसलिंग करते हैं, किस टाइप का प्रोग्राम है. सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल. और प्रिपेयर तभी हो पाएंगे जब एक्चुअली आप कर रहे हैं, बिकॉज अगेन आई एम सेइंग दैट नेट focuses on quality, not quantity. And we as an institution, when we are going to apply for that, we focus on quantity, number, digits. कागज तैयार, अरे कागज तैयार है, पकड़े जाओगे. पीयर टीम भी इतनी बुद्धू तो नहीं होती है, they are very smart people having a long term experience of NEC visits ना, वो कहते कुछ नहीं है. एक बात ध्यान रखिएगा, NEC की विजिट की जब टीम आती है, their name is peer team, they're not inspection team. They are just going to share their own experiences, how you can do better. आप जो कर रहे हैं, always there is a scope of betterment. वो आप उनसे freely share करिए जो कुछ वो आपसे कहते हैं. इंस्पेक्शन टीम नहीं है, अगर इंस्पेक्शन का काम करती है तो वो गलत है. This is not fair, है ना. तो कोई फोबिया नहीं है. नेक इज नॉट ए फोबिया. नेक को आप बिल्कुल लाइटली लीजिए, फ्रेंडली लीजिए कि नेक आ रही है हमारे पास, नेक, दैट इज अ मैटर ऑफ प्राउड फॉर यू. और that you will definitely like and pleasure these 3 days, बशर्ते कि आप fully dedicated हैं, fully devoted हैं to your institution. एक चीज मैं आपसे और थोड़ा सा शेयर करूंगी. peer team visit के दिनों में 3 दिन के लिए सिर्फ आप अपने घर को भूल जाइए. 3 दिन you devote, dedicate to your institution, अपने संस्था को दे दीजिए. उस समय आपका जो your behavior, your teamwork should speak कि टीम है यहाँ पर, और वो टीम वर्क बोलती है. और पीयर टीम जो होती है उससे बड़ा इन्फ्लुएंस होती है कि हाउ, मतलब पीयर टीम क्वांटिटी के साथ साथ दे सी द क्वालिटी ऑफ योर टीचर्स, कि टीचर हाउ मच. बिकॉज जनरली जो एक मैंने आपको बताऊं, जो 3 फीचर्स हम फर्स्ट पेज पे बताया था जनरल इंफॉर्मेशन में देते हैं, उसमें हम जनरली एक जरूर लिख के आते हैं, टीचर्स, स्टाफ मीन्स नॉन टीचिंग स्टाफ, principal or the administration we can say, and the management is devoted to the institution. If they find so कि you people are working, मतलब उस समय यदि आपको आपकी संस्था के साथ कोई छोटी मोटी बात चल भी रही है, भूल जाओ उन 3 दिनों में, क्योंकि संस्था से ही तो आप जुड़े हुए हैं. मेरी आइडेंटिटी क्या है? उषा अरोड़ा हैज नो आइडेंटिटी. आप कहेंगे कौन उषा अरोड़ा? बट व्हेन आई से प्रोफेसर उषा अरोड़ा, हरियाणा स्कूल ऑफ बिजनेस, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देन इट मैटर्स अ लॉट कि उषा अरोड़ा, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी. एंड इफ आई से माय यूनिवर्सिटी इज A++, that speaks my identity also. मेरी आइडेंटिटी क्या है? मेरी आइडेंटिटी मेरी संस्था के साथ है. तो आप अपनी संस्था के लिए फुल डेडिकेशन के साथ, फुल डिवोशन के साथ काम करिए, और उन 3 दिनों में ये मान के चलिए कि मुझे A++ चाहिए ही चाहिए, मुझे चाहिए. आपकी संस्था को A++ मिलेगा तो आपको भी मिलेगा, आपकी आइडेंटिटी उसके साथ जुड़ेगी. आज मुझे यहाँ रिसोर्स पर्सन बुलाया जाता है, क्यों बुलाया जाता है? माई आइडेंटिटी इज बिकॉज ऑफ माई गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी. सो आई ऑलवेज सैल्यूट, आई ऑलवेज प्रेज, I am always happy with my institution which gives me my butter and bread also. तो छोटी मोटी यदि आपको शिकायत है तो आगे पीछे आप अपनी सुलझा लीजिएगा अपने प्रिंसिपल सर के साथ, या आपके जो वाइस चांसलर है, whatever whosoever is in the institution head, so you discuss. But during these 3 days कोई नहीं. I am sharing this thing with you particularly because we are receiving some mails of complaints from the college people. डोंट सेंड प्लीज, ऐसा मत करिए. आप अपनी संस्था के साथ फिर नाइंसाफी कर रहे हैं.
ये तो क्राइम है, इट्स ए बिग क्राइम कि जो संस्था आपको बटर ब्रेड दे रही है आप उसी के बारे में गलत लिख रहे हैं। आप ए ग्रेड आने दीजिए, A++ आने दीजिए, शिकवा शिकायत बाद में करिए। सो नाउ अगेन आई एम कमिंग टू माय पॉइंट, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, student full time teacher ratio. What is your student full time teacher ratio? Data for the latest completed academic year. That speaks a lot. इसके भी बहुत मार्क्स हैं कि आपके टीचर कितने हैं full time teacher. Here I am talking about full time teacher. So you have to mention the full time teacher ratio with the students. It should not be because AICT में तो fix है कितना students होना चाहिए. Next, teaching learning process. Student centric methods. Now focus is on this. जी इसमें ये हैंडफ्री में आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? Now is it clear? Yes ma'am, it is audible. Now audible? Yes ma'am, it is audible. Okay, thank you. Now the student centric methods. Gone are the days. मैंने अभी आपसे किया कि gone are the days जब हम कहते थे मुझे तो जो आता है मैं पढ़ाऊंगा, जैसे आता है वैसा पढ़ाऊंगा। नहीं, अब तो NEP भी ये बात नहीं कहती। NEP कहती है नहीं भाई छोड़ो, स्टूडेंट्स क्या चाहता है, राइट पर्सन, राइट टाइम, राइट, जो हम मार्केटिंग की डेफिनेशन देते थे, विच इज एप्लीकेबल इन द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आल्सो। एवरी टाइम यू हैव टू अडॉप्ट द पेडागोजिस स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड जस्ट सच एज एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ये आप अडॉप्ट कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ करिकुलम, जो पार्ट 1 में आपका आया है। पार्टिसिपेटिव लर्निंग, गोन आर द डेज, टीचर आया, स्टार्ट किया लेक्चर, कैसेट चली, टेप रिकॉर्ड चला और लेक्चर स्टार्ट हो गया। नो, participative means both sided learning. Students have to participate, they have to ask, even sometimes students know better than the teachers because media ने इतना exposure दे दिया है बच्चों को। So if the PPT presentation, PowerPoint presentation, problem solving methodology and many more like seminars, visit to other institution, educational trips, projects, individual projects, assignments, brainstorming activities, role play. देखिए प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिए, आप डोंट टेक इट मी अदरवाइज, आई एम द पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। आज का बच्चा क्लास में क्यों आए? माय सिंपल क्वेश्चन इज टू ऑल एज ए टीचर, क्यों आए? बिकॉज नॉलेज इज अवेलेबल इन गूगल। गूगल में आप कुछ भी डालो आपको हर चीज का जवाब मिल जाता है। तो व्हाई द स्टूडेंट will come to your class? There is a question mark, big question mark on this. We as a teachers, आपको ये भी पता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर तो ऑनलाइन एजुकेशन की बात की गई है, और कोरोना के पीरियड में पर्टिकुलर विच हैज गिवन ए चैलेंज टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सारा हमने ऑनलाइन पढ़ाया था। तो अब कहीं ऐसा ना हो हमारा जो फ्यूचर है कि ऑफलाइन को रिप्लेस कर दे ऑनलाइन। एज अ ऑफलाइन वी हैव टू प्रोवाइड समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, समथिंग यूनिक, समथिंग डिफरेंट। कुछ ऐसा प्रोवाइड करिए एज ए टीचर कि ऑनलाइन आपको रिप्लेस नहीं कर पाएगी। बच्चा क्यों आए? बच्चा आजकल आप देखोगे लाइब्रेरी में बच्चे नहीं जाते हैं, नो वन विजिट्स द लाइब्रेरी। पहले लाइब्रेरीज कितना यूज होती थी, हम देखते थे रजिस्टर के अंदर साइन होते थे बच्चों के, वॉक इन पर डे, है ना, हंड्रेड्स, मोर देन हंड्रेड्स होता था। अब 20-30 स्टूडेंट्स वॉक इन पर डे, दैट शोज, है ना, रिसोर्सेज का कितना मिस यूटिलाइजेशन हो रहा है। सो माय क्वेश्चन इज कि एज ए टीचर्स आप बच्चों को रोज ये सोचिएगा क्या एक्स्ट्रा हम दे रहे हैं बच्चों को, क्या मैं एक्स्ट्रा दूं जिससे बच्चा मेरी क्लास में कल आए। आई शेयर विद यू माय पर्सनल एक्सपीरियंस। मेरा जो पढ़ाने का तरीका है पर्सनल, दैट इज रोल प्ले। रोल प्ले के अलावा अदर थिंग्स आर आल्सो सेमिनार on workshops, that are projects, assessment, assignments, GD, brainstorming activities I continue, but role play is generally I follow. I'll tell you one thing कि बच्चों को कैसे पढ़ाएं। My personal small example, आपको just to share with you a small example. मेरे पास अक्सर आजकल आप लोगों के पास भी कॉल्स आती हैं तो अनवांटेड कॉल्स बहुत सारी आती हैं। क्या आप होम लेना चाहेंगे? क्या आप ये, और इमीडिएटली पता नहीं हम कभी कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, कभी कोई ऑनलाइन क्लास है, wherever I'm busy, sometimes busy with my kids or sometimes busy with my kitchen. तो कॉल छोड़कर कॉल को अटेंड करने के लिए हम अपना इंपॉर्टेंट काम छोड़ते तो बहुत गुस्सा आता है, इमीडिएटली कट कर देते हैं कॉल को, बहुत गुस्सा आता है। बट व्हाट हैपेंड विद मी कि एक कॉल मेरे पास आई, और आई जनरली डू दिस द थिंग, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि कॉल क्या थी,
क्या आप रातों रात अमीर होना चाहते हैं? अरे दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी टू लिसन, रातों रात अमीर होना। तो आप भी स्टूडेंट्स की दुखती रग, जिसको कहते हो ना दुखती रग, कि स्टूडेंट क्या चाहता है वो पकड़ लीजिएगा। तो उसने मुझे कॉल पे बोला क्या आप रातों रात अमीर होना चाहते हैं? तो मैंने उसकी वो जो प्लानिंग बता रहा, क्या बता रहा, 15 मिनट की कॉल अटेंड की। अदरवाइज तो मैं तो सेकंड्स में कॉल काट देती हूँ। आई डोंट अधेयर सच टाइप ऑफ द कॉल, बट आई लिसन दैट कॉल वेरी केयरफुली, है ना। व्हाई? बिकॉज the way they presented the thing that matters a lot. The same marketer जो मार्केटिंग में प्रोडक्ट रखता है, कितनी बढ़िया एडवर्टीजमेंट करता है, तो सेम थिंग यू हैव टू डू एज अ टीचर्स आल्सो। मैं अपने क्लास के अंदर स्टूडेंट्स को जाते हुए जब लास्ट के 10 मिनट होते हैं, आई ऑलवेज गिव देम ए क्वेश्चन मार्क कि कल हम ये बात करेंगे कि ये ऐसा हुआ तो कैसे हुआ। अब स्टूडेंट जनरली दे वेट फॉर माय क्लास। अब क्लास नहीं होती किसी दिन, उस दिन तो फोन आता है कि मैडम फिर वो आपने क्वेश्चन मार्क छोड़ा था। जैसे आप देखोगे सीरियल्स के अंदर होता है ना, उसके बाद बहू का क्या हुआ, फिर सास ने क्या कर डाला, तो ये क्वेश्चन मार्क होता है। तो नेक्स्ट डे वी वेट फॉर द सीरियल्स कि अरे वो क्या होगा। तो सेम थिंग यू हैव टू डू विद योर क्लासरूम टीचिंग। Every day come with the new case studies. Every day come with the new examples. Case study, example, role play. इतना इंटरेस्टिंग हो, क्योंकि रोल प्ले आप देखोगे जो मूवीज देखने हम जाते हैं, मूवीज हम पे ज्यादा इम्पैक्ट डालती है। वर्बल कोई चीज सुनते हैं, टीवी पढ़ा, बुक पढ़ा, सॉरी टीवी पढ़ा नहीं, टीवी देखते हैं हम लोग, सॉरी टीवी देखते हैं, दैट हैज मोर इम्पैक्ट देन ए न्यूज़पेपर, देन ए बुक। बुक के अंदर पढ़ा निकल गया। तो सेम इफ यू आर प्लेइंग ए रोल प्ले करके अपने बच्चों को दिखाइए कि ये प्रोडक्ट बेचना है, आप इस प्रोडक्ट को कैसे बेचेंगे, that impacts a lot. So some type of the pedagogies you have to adapt. Only then the students will start coming to your class. They will wait for your class, है ना? They'll not mind. But if you don't deliver anything new, anything innovative, anything special, students will not come to your class. तो students को आपने बुलाना है. So these type of the pedagogies and many more pedagogies, brainstorming activities, you have to follow. Next, teachers use ICT enabled tools for effective teaching learning process. इन सब के आपको प्रूफ लगाने पड़ेंगे, तब हम बात मानेंगे कि you are applying all these things. इवन जब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की पीयर टीम विजिट्स होती है तो डिपार्टमेंट वाइज भी पूछा जाता है कि विच पेडागोजी जनरली यू पीपल आर यूजिंग टू डिलीवर योर करिकुलम इफेक्टिवली। सो आईसीटी के ऊपर आज की डेट में आफ्टर कोरोना बहुत फोकस है कि 100% आईसीटी आपके लर्निंग प्रोसेस है या नहीं है। और मोर ओवर अब तो जिन संस्थाओं के पास A+ होगा, दे कैन स्टार्ट ऑनलाइन प्रोग्राम्स आल्सो, ऑनलाइन प्रोग्राम, जो कि NEP 2020 में भी बात हुई है। नेक्स्ट इज रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स टू मेंटर फॉर एकेडमिक एंड अदर रिलेटेड इश्यूज। नंबर ऑफ मेंटर्स, अभी मैंने बात की कि मेंटर का अगर आप क्लेम करते हैं तो यू हैव टू कीप ए record of all the mentor-mentee relationship. Next is innovation and creativity in your teaching learning that you have to show. Teacher profile and quality. Now that matters because teacher की quality और profile अच्छा होगा तभी तो teaching learning process interesting होगा और effective होगा। Teacher का profile क्या है आपके यहाँ? Average percentage of full-time teacher against the sanctioned post during the last 5 years. Average percentage of full-time teacher with PhD, DM, DNB, super specialty, DSc, DLIT during the last 5 years. So you have to give the records and the documents. ये सब चीजें अब मैं आपको यहाँ इसलिए बता रही हूँ कि यहाँ पर भी आएगी और जो ब्रीफ समरी जो आपने फ्रंट पेजेस पे SSR में लगाई वहां भी आती है। तो जनरली पर्सनली आई फाउंड दिस थिंग दैट डज नॉट मैच। यहाँ पर आप कुछ और डाटा दे रहे हो, क्वालिटी टीचर्स का, नंबर ऑफ टीचर्स का कि इतना PhD है, इनिशियली समरी में आप और डाटा दे रहे हो, तो देयर इज समथिंग लैकिंग। इट मींस दिस शोज योर कैजुअल एटीट्यूड, दिस शोज योर केयरलेसनेस। सच टाइप ऑफ डिस्क्रिपेंसी शुड नॉट बी देयर, दिस मस्ट मैच। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ फुल टाइम टीचर्स, PhD, इसी में अपडेटेड के अंदर सारी चीजें आ जाती हैं कि आपके टीचर्स ने अंदर कितना ओरिएंटेशन किया, कितना रिफ्रेशर किया, आपके टीचर्स बाहर कितने FDP अटेंड करके आए, आपकी इंस्टीट्यूशन ने कितने FDP फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम किए, और आपके यहाँ क्या पॉलिसीज हैं।
टीचर्स को रिफ्रेशर करवाने की, ओरिएंटेशन करवाने की, सेमिनार्स में प्रेजेंट करवाने की पेपर के लिए, क्या आप उनको रिइंबर्स करते हो, कैसे मोटिवेट करते हो अपने टीचर्स को? ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स नीड्स टू बी प्लेस्ड हियर. नेक्स्ट इज इवैल्यूएशन प्रोसेस एंड रिफॉर्म्स. आप देखोगे टाइम गोज ऑन चेंजिंग वेरी फास्ट एंड वेरी फ्रीक्वेंट, एंड learning is a process which is never ending and ever pending process. Even as a teachers, we are learners throughout our life. क्योंकि learning की कोई उम्र नहीं होती है. Up throughout the life, we people are the learning. Evaluation process and reforms that matters a lot. कि आज देखेंगे कि आज से कुछ साल पहले annual system होता था, तो अब हमको लगने लगा ऐसा, क्योंकि as the time goes on changing very fast and very frequent, our education institution system that also needs to be updated, that needs to be changed as per the changes which are taking place in the environment. People feel that एक साल में बच्चा हफ्ता पढ़ता है और बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, सारा साल तो उसने पढ़ाई नहीं की. तो that was not the right system to evaluate the students. So later on it was realized that एक सिस्टम आए, सेमेस्टर सिस्टम आया, सेमेस्टर के बाद ट्राइमेस्टर सिस्टम आया, ट्राइमेस्टर सिस्टम के बाद चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम आया. I would love to share with you all that institutions claim choice based credit system, but actually they don't know the meaning of the choice based credit system. choice based credit system होता क्या है? कह देते हैं हम लोग ने फॉलो कर रखा है, पर प्रैक्टिकली बहुत सारी इंस्टीट्यूशन ने choice based credit system फॉलो ही नहीं किया हुआ है. चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में ओपन इलेक्टिव और इलेक्टिव दो पेपर अलग अलग होते हैं. ओपन इलेक्टिव का मतलब बच्चा कुछ भी कहीं से पढ़ सकता है, तो इतना तो हमारे यहाँ पॉसिबल नहीं है. वी एज ए इंस्टीट्यूशन हैव सम लिमिटेशंस. लिमिटेशन है, यूं तो रात को भी क्लासेस लगाएंगे तो भी टाइम टेबल नहीं बन पाएगा. टाइम टेबल बनाना अपने आप में बड़ा कॉम्प्लेक्स है. तो जनरली बच्चों को हम एक लिस्ट दे देते हैं ओपन इलेक्टिव की, कि इनमें से कोई एक पेपर आप पढ़ लीजिए थर्ड सेमेस्टर में या फोर्थ सेमेस्टर में, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से. बट देयर शुड बी ए सेपरेट लिस्ट. आप अपना करिकुलम डिजाइन कर रहे हैं, करिकुलम डिजाइन के अंदर यू अटैच ए लिस्ट ऑफ द ओपन इलेक्टिव कि ये दीज ओपन इलेक्टिव वी आर ऑफरिंग टू आवर स्टूडेंट प्रोग्राम वाइज, कि एमबीए प्रोग्राम के लिए ये है. हालांकि ट्रू स्पिरिट तो यही है कि कोई भी बच्चा कभी भी पढ़ सकता है, और ट्रू स्पिरिट तो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम की इवन क्रेडिट्स आर आल्सो फ्लेक्सिबल. आप 2 साल का कोर्स 1 साल में भी कर सकते हो. हालांकि हम लोग वो भी नहीं कर पा रहे, बट एटलीस्ट इलेक्टिव पेपर एंड ओपन इलेक्टिव की जो लिस्ट है दैट शुड बी प्रिपेयर्ड सेपरेटली बच्चों को. दैट देन यू कैन क्लेम दैट यू आर फॉलोइंग चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम. नाउ इवैल्यूएशन सिस्टम, तो अब सेमेस्टर सिस्टम, सेमेस्टर से ट्राइमेस्टर पे आए तो भी लगा दिस इज नॉट अ परफेक्ट सिस्टम. हाउएवर नथिंग इज परफेक्ट, बट स्टिल हम इंप्रूवमेंट तो कर सकते हैं. ऑलवेज देयर इज स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट. सो इंप्रूवमेंट में क्या है? रिफॉर्म्स इन कंटिन्यूअस वर्ड इज देयर. बच्चे की कंटिन्यूअसली सेमेस्टर में और ट्रिमेस्टर में लगातार रोबस्ट जिसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी, वैरायटी ऑफ एक्टिविटी नीड्स टू बी कंफर्म. यूनिट टेस्ट हो रहे हैं, आज सेमिनार हो रहा है, आज रोल प्ले हो रहा है, assessment हो रही है. This is continuous evaluation system. On the basis of that you can evaluate a system. ये नहीं कि 3 महीने 6 महीने के बाद एक पेपर होगा तो आपने देखा तभी इंटरनल असेसमेंट पिक्चर में आई. अब इंटरनल असेसमेंट के भी देयर आर वेरियस एलिमेंट्स. आप कौन से एलिमेंट्स रखना चाहते हैं ये आपकी स्वीट विल है, बट देयर शुड बी, यू हैव टू prove before the NAAC that you are going to evaluate your students on the continuous internal evaluation system, and your internal assessment system is transparent and robust in terms of frequency and variety. Means transparent कैसे कि बच्चे ने एडमिशन लिया और उसको हमने एक बुकलेट प्रोवाइड की, then you have to show that booklet to the NAAC peer team member and send a booklet to the NAAC agency also कि ये हम that shows you are following a transparent system. वेबसाइट पे डाल दीजिएगा अपने और अच्छे अच्छे प्रोमिनेंट प्लेसेस पे लगा दीजिएगा. वन थिंग मोर आई वुड लाइक टू शेयर विद यू, NAAC peer team ये भी देखती है, हालांकि मेरे पॉइंट में नहीं है, बट स्टिल आई वुड लव टू कवर बिकॉज ये कहीं आया नहीं है, कि आपके जो इंपोर्टेंट बैनर्स होते हैं कई बार हम विजिट करते हैं वो होते ही नहीं है, जबकि यूजीसी कहती है कि ये प्रोमिनेंट प्लेसेस के ऊपर आप अपना, वो कॉलेज वाले कहते हैं हमने जी वेबसाइट पे डाला हुआ. वेबसाइट तो 24 घंटे हम खोलते नहीं ना, बच्चे घूम रहे हैं. सो जीरो टॉलरेंस रैगिंग, जीरो टॉलरेंस, बिकॉज NAAC in the Supreme Court is very serious about the
तो अच्छे अच्छे जीरो टॉलरेंस यूजीसी की तरफ से जैसे आता है जीरो टॉलरेंस रैगिंग, वो बैनर बनाइए, प्रोमिनेंट प्लेसेस पर अपने कॉलेज के और इंस्टीट्यूशन पे लगाइए। सेकंड थिंग, पहले होता था सेक्सुअल हरासमेंट, इस तरीके से कोई कमेटी थी, दैट नेम एंटी सेक्सुअल हरासमेंट, दैट नेम हैज बीन चेंज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। नाउ द ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज दैट यू हैव टू फॉलो, you constitute a committee in the name of internal complaint committee. इंटरनल कंप्लेंट कमेटी वही काम करती है जो सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी करती थी, यू हैव टू फॉर्म। और अब ये नहीं कि उषा अरोड़ा, मिस्टर सुअजय जैन जी, रवि व्यास जी, दीज आर द मेंबर, नो, गिव देयर फुल कॉन्टेक्ट नंबर, देयर एड्रेस, वो कौन से डिपार्टमेंट में है, कॉन्टेक्ट नंबर, एंड दैट आल्सो बी प्लेस्ड एट द प्रोमिनेंट प्लेसेस एट इन द इंस्टीट्यूशन, ताकि बच्चे को कोई दिक्कत हो कभी भी किसी टाइप की तो इमीडिएटली दे में कॉन्टेक्ट टू देम। ऐसे ये सब तैयारी का पार्ट है हमारे नेक के। नेक्स्ट इज mechanism to deal with examination related grievances. There is a mechanism. Generally when we visit to the college or the institution, they say कि एग्जाम जो होता है इंटरनल असेसमेंट का तो ठीक है हमारे पास है, लेकिन एक्सटर्नल का तो यूनिवर्सिटी के पास होता है। नो, at the college level, at the institution, you must have a committee that will assist the student. जो आपके कमेटी, आप कहेंगे कमेटी है, मना तो कोई करता ही नहीं है, तो फिर कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन दिखाइएगा आप, यू हैव टू शो ए डॉक्यूमेंट, और वो कमेटी किसने कॉन्स्टिट्यूट की, किस लेवल पे कॉन्स्टिट्यूट हुई है, एवरी टाइम यू हैव टू शो दैट। एग्जामिनेशन रिलेटेड, दैट ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड एंड एफिशिएंट। अब ठीक है कमेटी है, लेकिन कमेटी काम कर रही है कि नहीं, बच्चे ने एप्लीकेशन डाला, मेरा इंटरनल असेसमेंट में आना चाहिए था 9 स्कोर और दिया हुआ मुझे 7 स्कोर, and you are not going to resolve the dispute, that means it's not time bound. Time bound must be, बच्चे ने एक एप्लीकेशन दी है तो we take 3 days only, we take 2 days only to resolve the problem of the student. That is efficient system. So transparent, time bound and efficient, focus is on this. The institution adheres to the academic calendar. Every institution, university, college, or the university, college or the institution has to frame a academic calendar. Academic calendar में academic activities आती हैं, but यहाँ academic calendar है for the conduct of continuous internal evaluation की. There are 2 type of calendar. One is academic planning, जिसको कहते हैं पूरे सेमेस्टर का जिसमें प्लान होता है, that is separate. Here कई बार कंफ्यूजन होता है, फर्स्ट कॉलम में क्या आएगा, सेकंड कॉलम में आए, तो आप उसको ध्यान से पढ़िएगा कि फर्स्ट कॉलम में क्या आना है, सेकंड में। तो यहाँ पर बात हो रही है क्या संस्था अध्ययन करती है एकेडमिक कैलेंडर को। एकेडमिक कैलेंडर में जैसे हमने लिखा यूनिट टेस्ट होगा इस डेट को, इस टेस्ट इस वो सेमिनार होगा, इस दिन हमने सर्वे करवाना है, इस दिन हमने ये करवाना है, तो क्या उसको अध्ययन भी करती है, उसको फॉलो भी करती है कि जस्ट वो बनाया हुआ है। Student performance and learning outcomes. This is very, very, very important. And in the light of national education policy, we have to ensure as a teacher, as a higher education institution, outcome based education. बार बार outcome based education की बात हो रही है। वो दिन नहीं गए मैं बढ़ाऊंगा वही जो मुझे आता है, नहीं भाई। Students very smart, very demanding. It's the responsibility of the teachers. It's the responsibility of the higher education institution to provide their students with education and training throughout their life. Throughout means पढ़ाई की कोई उम्र नहीं है। अब ये NEP भी बात करता है। NEP फोकस ही आउटकम बेस्ड के ऊपर है, टोटली NEP फोकस्ड ऑन आउटकम। हालांकि NEP के अंदर आप देखेंगे अलग अलग संस्थाएं बांट दी, भी देखेंगे प्रैक्टिकली उस पर कितना काम हो पाता है। वो कहते हैं रिसर्च इंस्टीट्यूशंस अलग होनी चाहिए, है ना, यूजी कॉलेज अलग होंगे, पीजी कॉलेज अलग होंगे, रिसर्च अलग होगी, जबकि अभी तो हम मानते हैं रिसर्च एंड टीचिंग दे आर कंप्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। उनका क्या सिनेरियो निकलता है, लेट अस वी सी एंड वी हैव टू वर्क ऑन दैट क्राइटेरियन आल्सो। बट ये पक्का है कि हायर एजुकेशन एक बात NEP बार बार ये कहती है कि वी हैव टू प्रोवाइड द एजुकेशन whenever, wherever, however desired by the students. तभी तो ऑनलाइन एजुकेशन पे फोकस बहुत ज्यादा है कि कोई अमेरिका में रहने वाला पर्सन भी हमारे यहाँ का कोई प्रोग्राम करना चाहता है तो ऑनलाइन एजुकेशन कैन बी प्रोवाइड, और ऑनलाइन प्रोग्राम वही कर पाएगा who
gets A plus NAAC accreditation. So the focus on NEP is, और NAAC भी इस बात पे focus करता है कि we have to provide the education and training throughout their life, whenever, wherever, however desired by the students. At a ध्यान से सुनिएगा, affordable cost. आप देखेंगे NEP में बार बार affordable cost की बात आई है, affordable price and high quality and accessible. Accessible means that should be in the reach of the students, that should be in the reach of the candidates wherever they want. अमेरिका में चाहेंगे तो अमेरिका में आप अवेलेबल करवाएंगे, यूरोप में चाहेंगे तो आप यूरोप में अवेलेबल करवाएंगे, wherever they want. बॉम्बे में रहने वाला एक बंदा हमारा कोर्स करना चाहेगा, बट प्रोग्राम शुड बी आउटकम बेस्ड. क्योंकि अगर हम आउटकम बेस्ड की बात नहीं करते, आउटकम बेस्ड की बात नहीं करते, तो इट शोज दैट वी आर कैजुअल, हम कैजुअल हो जाते हैं, वी आर केयरलेस. बट आउटकम की बात करें कि इसके बाद ये आना चाहिए. तो आपने देखा करिकुलम डिजाइन किया, जब करिकुलम डिजाइन करते हैं उसी समय आउटकम बेस्ड की बात हो. मैं अजय जैन जी से पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगी, बिकॉज दिस आउटकम बेस्ड एजुकेशन एक 2.6 क्राइटेरिया जो है, इस पे एक सेपरेट आप 7 डेज का या 2 डेज का 3 डेज का प्रोग्राम करवाइए. यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स को, टीचर्स को आउटकम बेस्ड एजुकेशन का क्लेम करते हैं, प्रैक्टिकली पता ही नहीं है प्रोग्राम आउटकम कैसे बनाने हैं, कोर्स आउटकम कैसे बनाने हैं, पीईओस क्या होता है, सीओस क्या होता है, फिर उसकी मैपिंग कैसे करनी है. मैपिंग का मतलब कितना % वो अचीव हुआ. कहने को तो नेक में जाते हैं, हाँ अचीव हुआ 100%. एक एक एक्टिविटी की आपको अचीवमेंट करनी है. तो इस पे तो फुल फ्लैश्ड एक 2 घंटे का 4 घंटे का लेक्चर तो सिर्फ प्रोग्राम कोर्स आउटकम बनाने कैसे हैं. ब्लूम्स टैक्सोनॉमी मेरे ख्याल से सब लोगों ने उसकी लाइट में देखा होगा. ब्लूम टैक्सोनॉमी की लाइट के अंदर सबसे पहले हमें हर प्रोग्राम का, थोड़ा सा मैं इस पे टाइम लूंगी 5 मिनट का, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज तो इसके ऊपर फुल फ्लैश सेपरेट प्रोग्राम नीड्स टू बी डिवाइस्ड. पहले आपका यूनिवर्सिटी का और इंस्टीट्यूशन का विजन और मिशन होता है. इन द लाइट ऑफ द विजन एंड मिशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन, एवरी प्रोग्राम, मेरा जैसे प्रोग्राम एमबीए है, मैं अपने एमबीए प्रोग्राम का विजन और मिशन डिसाइड करती हूँ. अब माय प्रोग्राम विजन मिशन इज सो एंड सो. इसकी लाइट में मैं अब अपना प्रोग्राम आउटकम डिसाइड करती हूँ. जब हम करिकुलम बनाते हैं, ये तब की बातें हैं, करिकुलम पहले पार्ट में बनाया गया है, यहाँ पे लर्निंग आउटकम्स की बात हो रही है, पर इट इज लिंक्ड विद द फर्स्ट क्राइटेरिया. फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोग्राम मेरा बच्चा एमबीए करने के बाद क्या 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 कर लेगा, आप अपने प्रोग्राम आउटकम बनाइए. सेल्फ एंटरप्रेन्योर स्टार्ट कर लेगा, वो ग्लोबल कंपनी के अंदर, नेशनल लेवल के अंदर, एफएमसीजी के अंदर काम. सो 5 आउटकम्स इफ आई हैव फ्रेम्ड फॉर माय एमबीए प्रोग्राम. नेक्स्ट इज प्रोग्राम पीईओस. फिर कोर्स आउटकम. कोर्स आउटकम मतलब एक एक कोर्स का. एमबीए के अंदर मार्केटिंग मैनेजमेंट कोर्स है, बिजनेस लेजिस्लेशन कोर्स है, स्टैटिस्टिक्स कोर्स है. हर कोर्स का आउटकम डिसाइड करिए कि मेरा मार्केटिंग मैनेजमेंट का बच्चा करने के बाद यू हैव टू फ्रेम, ये कर लेगा, वो कर लेगा, रिकॉल कर लेगा, इंप्लीमेंट कर लेगा, अप्लाई कर लेगा, कंसेप्ट क्लियर कर लेगा. 4 और 5 कोर्स आउटकम्स आप डिसाइड करिए. 4 और 5 आउटकम्स डिसाइड करने के बाद नाउ यू हैव टू मैच, मैपिंग जिसको हम कहते हैं, कि हमारा कितना आउटकम अचीव हुआ. हर कोर्स का आपको आउटकम फिर प्रोग्राम आउटकम के साथ मैच करना है. और ये नहीं कि सिर्फ जो मेजर पेपर होता है कि इतना, आउटकम में जनरली इंस्टीट्यूशन क्या ले लेते हैं, पास परसेंटेज के बच्चे इतने पास हो गए, हमारा आउटकम ये है. नो 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 नो, ईच एंड एवरी एक्टिविटी. इवन इंटरनल असेसमेंट के अंदर आपने एक्टिविटी बच्चों को कोई दी कि सर्वे करके आओ, तो ये कौन से आउटकम के अंदर, कोर्स आउटकम में आता है, 3rd आउटकम में आता है, कोर्स आउटकम में, या 4th में, 3rd में आता है. अब आप देखिए वो कितने नंबर की एक्टिविटी थी, कितने नंबर की एक्टिविटी 5 मार्क्स की थी, उसमें से आपने उसको कितना दिया, 3 नंबर दिया. अब ये देखेंगे कि वो मल्टीप्लाई करके, फार्मूला लगा करके, देयर इज अ फार्मूला, कि वो कितना % अचीव हुआ, अटेन हुआ. फिर इस कोर्स आउटकम को यू हैव टू मैच विद द प्रोग्राम आउटकम्स. तो इट्स अ वेरी बिग, मतलब कि इसके ऊपर पूरा वर्कशॉप लंबा चौड़ा किया जा सकता है. Then the teachers will understand the right spirit of program outcomes, course outcomes, and next, that is also which I am telling you, and by the institution are stated, displayed on the website and communicated to the teachers and students.
बना दिए कोर्स आउटकम, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द टीचर जिन्होंने कि इसको पढ़ाना है, एंड द स्टूडेंट्स आल्सो। तो यू हैव टू गिव ए प्रूफ कि हम इसको वेबसाइट पे डाल देते हैं, हम उसको करिकुलम डिजाइन की जो हमने बुकलेट बनाई है, बच्चे के एडमिशन होते ही बच्चों को हाथ में दे दिया जाता है, ताकि बच्चों को पता ही चल जाए कि इस प्रोग्राम को करने के बाद, है ना, वेयर दे विल बी प्लेस्ड, क्या क्या वो कर सकते हैं। नेक्स्ट, अटेनमेंट ऑफ प्रोग्राम आउटकम, जिसको मैं मैपिंग के नाम से बता रही हूँ कि मैपिंग करनी है हमने, कितना परसेंट हमारा ये अचीव हुआ है। सो दिस इज आल्सो टोटली आउटकम बेस्ड एजुकेशन। बार बार नेक भी, इवन एनबीए भी, एनबीए जो इंस्टीट्यूशंस हैं, नेक एआईसीटी इंस्टीट्यूशंस हैं, एनबीए टोटली फोकस करता है स्टूडेंट, दिस इज आउटकम बेस्ड एजुकेशन। अब थोड़ी सी बात और करते हैं हम, एवरेज पास परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द लास्ट 5 years, total number of final year students who have passed the university examination during the, now I'm talking about the changes, the reorientation of our system in the light of NEP, in the light of, कागजों की बात नहीं कर रहे, प्रैक्टिकल की बात करते हैं। when a student takes admission in our institution, generally the first question they ask प्लेसमेंट। एक टर्म यूज होती है ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर। ये टर्म आज से कुछ साल पहले एप्लीकेबल थी, एंड दैट वाज एक्सेप्टेड बिकॉज टाइम गोज ऑन चेंजेस वेरी फास्ट एंड वेरी फ्रीक्वेंट। द स्टेटमेंट्स, द थिंग्स व्हिच वर एक्सेप्टेड ड्यूरिंग द last few years, which are not going to be accepted in the present scenario, because scenario has been changed nowadays. तो तब बच्चा सिर्फ और सिर्फ प्लेसमेंट की बात करता था। अब हमें आज के बच्चे का ओरिएंटेशन चेंज करना है कि हम प्लेसमेंट नहीं देंगे, प्लेसमेंट नहीं, प्लेसमेंट पहले होती थी ये बात। बच्चे को न्यू एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया है कि वी आर, बिकॉज जॉब्स है नहीं ना, देयर इज अ ह्यूज गैप, मार्केट में जॉब है नहीं, सप्लाई ज्यादा है, बच्चे यूजी पीजी करके आ रहे हैं, निकल रहे हैं, दे आस्क फॉर द प्लेसमेंट, इंस्टीट्यूशन में क्लेम करते हैं, स्ट्राइक करते हैं कि प्लेसमेंट चाहिए। सो वी हैव टू रीओरिएंट, और माइंडसेट नीड्स टू बी चेंज, एटीट्यूड नीड्स टू बी चेंज ऑफ द स्टूडेंट्स कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पे इवैल्यूएशन कर रहे हैं हम, नौकरी नहीं है। देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन व्हाट इज द मार्केट सिनेरियो एंड व्हाट वी आर मेकिंग, प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर। सो स्टूडेंट्स का हमने कहना है कि आत्मनिर्भर बनो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी आत्मनिर्भर। एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं कि एम्प्लॉयमेंट दिला जाएगा, कि आपको हम एम्प्लॉयमेंट दिला सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट में दोनों चीजें आती हैं, रोजगार भी और स्वरोजगार भी। स्वरोजगार सेल्फ रिलायंस, सेल्फ एंटरप्रेन्योर जिसको कहते हैं। तो स्टूडेंट्स नीड्स टू बी, दे डोंट बी ए जॉब सीकर्स, be a job provider. Think new, think big, think out of box, be technology friendly, hard work, smart work, have courage. Let us have the dignity of labor also. अब क्या होता है कि हमारे यहाँ जो बच्चा है ना, वो प्लेसमेंट की कंपनी अगर आ भी जाती है ना, तो बैठते नहीं है, कितना है जी सेट्स, कितना है पैकेज, 10,000 है, नहीं, they will never appear. Why is it so? सोच ही ऐसी बना ली उन लोगों ने। डिग्निटी ऑफ लेबर, अगर हम यूएसए की, बाहर की यूरोपियन कंट्रीज और एडवांस कंट्रीज की नकल तो करते हैं, कई चीजों में, बहुत सारी चीजों में उनकी नकल करते हैं, तो अच्छी बातों में उनकी नकल क्यों नहीं करते? हमारे वहां बच्चा 17 ईयर्स में जब स्टडी स्टार्ट करता है ना कोई भी, तो साथ साथ अपनी अर्निंग खुद करता है। अर्न वाइल यू लर्न की स्कीम है, और शाम को करे, सुबह करे, एक्स्ट्रा टाइम में करे, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरता है, न्यूज़पेपर फेंकता है, व्हाटएवर दे डू, बट दे अर्न देयर लाइवलीहुड। बट हियर स्टूडेंट्स 17 से 25 साल तक पढ़ता है, 25 में जब नहीं मिलती जॉब, प्लेसमेंट नहीं होती है, तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो वी हैव टू चेंज द माइंडसेट। आउटकम बेस्ड एजुकेशन के अंदर वी हैव टू चेंज देयर माइंडसेट कि भैया आए हो तो अब हमने एजुकेशन भी पहले क्राइटेरियन में कवर हो चुका होगा, आई हो, कि किस टाइप की एजुकेशन देनी है, किस टाइप की, मतलब अगर बच्चा करने के बाद कारपेंटर बनना चाहता है, 3 months का करने चाहता है, तो ही must be capable of doing the carpentership. He must be capable of doing that particular job, what he wants to do. So 3 months, 6 months, 1 year, 2 years, 3 years, like multiple entry, multiple exit, that has been covered under the first criterion. I'm not going to touch
दैट। तो लोगों का, बच्चों का माइंडसेट जो है दैट नीड्स टू बी चेंज। आउटकम बेस्ड टेल्स अबाउट दैट कि बच्चा सेल्फ आत्मनिर्भर भारत जो की बात कर रहा है एनईपी, वो इसके अंदर भी है कि बच्चा ये करने के बाद चेंज करेगा। तो हमने बच्चे को स्वरोजगार सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस देना है, उसके अंदर स्किल डेवलप करना है। एजुकेशन के साथ साथ वी हैव टू, तभी तो न्यू एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फोकसेस ऑन द प्रैक्टिकल एक्सपोजर थ्रू आउट द क्लासरूम टीचिंग। अब तो हमारा ऑल द टाइम 2 years फोकस ऑन द क्लासरूम, क्लास के अंदर बच्चा बैठेगा, क्लास में बात करेगा। नो, अब ऐसा नहीं होगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की फोकस कि आप उसको कंपनी ऑन जॉब ट्रेनिंग दीजिए, प्रैक्टिकल एक्सपोजर दीजिएगा। And now I'm talking the total number of final year students who pass the university examination year wise. जब ये डाटा आप दिखाते हैं तो आप एक ऐसी स्लाइड बनाइएगा पीयर टीम के आगे, और जो नेक में भी भेजते हैं, यू मेक ए कंपैरिजन की यूनिवर्स आप अपना अपना बता देते हैं 70% इज दैट दिस ईयर, 80% दिस, इतना हुआ नहीं। यू हैव टू शो द कंप्लीट इंफॉर्मेशन। रैंक होल्डर्स आपकी यूनिवर्सिटी से कितने हैं, आपके कॉलेज से कितने हैं, आपके इंस्टीट्यूशन से कितने हैं, आपके गोल्ड मेडलिस्ट कितने हैं, और उसके साथ ही आप एक कंपैरेटिव, जो कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, यूनिवर्सिटी का रिजल्ट ये है और आपका रिजल्ट ये है। दैट मैटर्स अ लॉट, दैट स्पीक्स अ लॉट ना, कि आप यूनिवर्सिटी के मुकाबले में कहां स्टैंड, आप अपना अपना दे रहे हैं, तो वी आर नॉट एबल टू मेक द कंपैरिजन वेयर यू स्टैंड। इवन आप डिमांड रेशो भी जब बताते हैं तो नेबरिंग इंस्टीट्यूशन की भी आपसे पूछा जाता है कि नेबरिंग इंस्टीट्यूशन के अंदर कितना एडमिशन होता है और आपका कितना होता है। So that you have to prepare accordingly. Student satisfaction survey, teaching learning process, ये NAAC खुद करता है, और motivate your students to participate on this survey. कई बार तो मैंने देखा है data is very thin, 3%, 7% student only participate in the satisfaction survey. तो उसमें नंबर बहुत ज्यादा कट जाते हैं संस्था के। तो you motivate your students कि whenever there is a link provided by the NAAC, है ना, students की satisfaction का, तो so they also give their feedback. Next is overall analysis, strengths, weakness, opportunities and challenges of your institution. I personally feel that कोविड ने जैसे चैलेंज दिया, पर चैलेंज के साथ ही उसने हमें अपॉर्चुनिटी भी दी। अपॉर्चुनिटी क्या आई? ऑनलाइन एजुकेशन आई। सो यू कोरिलेट, इवन वीकनेस भी आप पॉजिटिवली दे सकते हैं। वीकनेस को कभी भी नेगेटिव वर्ड में मत दीजिएगा। Generally, I'm just giving you example. I don't say that you may be more intelligent than me. Generally, हम कहते हैं कि Mr. she is very poor. She is very poor in studies. वो तो नालायक है। Instead of saying that, the same thing can be presented in a positive manner and very effective and efficient manner. The institution, ये institution तो इस institution में कुछ नहीं होता, काम ही नहीं होता. Instead of saying that, if we say the institution needs to be improved in infrastructure matter, the institution needs to be updated, the institution needs to be like this way. So बात भी कह दी आपने, बात कहने के साथ साथ उसको अच्छे तरीके से कहा। तो things to be presented गलत भाषा में नहीं करिएगा। Next is recommendations for quality enhancement of the institution. Fourth is the 10, 8, 7. There is no hard and fast criteria. Generally, NAAC peer team give recommendation for quality enhancement of the institution, but they give you sufficient time. आपका मेंबर कोऑर्डिनेटर और आपके प्रिंसिपल और वाइस चांसलर जो भी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, they will share their report. Peer team will share their report with these 2 or 3 people. You take your time. Don't in hurry. कितना भी आप पे प्रेशर आए, आप अपने मस्ती से काम करिए, पूरी रिपोर्ट को ढंग से पढ़िएगा। क्योंकि नेक पेयर टीम सिर्फ एसएसआर पढ़ी है उसने, और सिर्फ 3 या 2 दिन की विजिट, क्योंकि नंबर ऑफ डेज हैव बीन रिड्यूस्ड नाउअडेज। अर्लियर यूनिवर्सिटीज में 5 days थे, नाउ दीज आर 3 days, और इंस्टीट्यूशन में अर्लियर देयर वर 3 days, नाउ देयर आर 2 days। तो इतना सब कवर नहीं हो पाता है, लेकिन कागज के मामले में आप सारे कागज अपनी तरफ से पूरे तैयार रखिएगा। तो उस पीयर टीम रिपोर्ट को आप बड़े प्यार से पढ़िएगा। wherever you want some change, you can request to the chairman of the peer team, and they will definitely respect your feelings also, because we are also the part of the system. कई बारी आप हमारे यहाँ accreditation के लिए आ रहे हैं, कई बारी हम आपके यहाँ आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स को भी एक बात जरूर बोलिएगा कि respect your responsibilities, respect
जो भी नौकरी मिले उसको करिए, डिग्निटी ऑफ लेबर जिसको मैं कह रही हूँ, रिस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ लेबर। ऐसा नहीं है कि हम लोग 8 की नहीं करेंगे, 10 की नहीं करेंगे। प्लेसमेंट मिल रही है तो हमें थोड़ा ओरिएंटेशन बच्चों का उस हिसाब से चेंज भी करना है, सेल्फ एंटरप्रेन्योर स्किल डेवलप करना है। सो आई होप from my side, coming together is a beginning, staying together is a progress, and working together is success. With these words, because otherwise this is never ending, ever pending, I must invite, no institution is a perfect institution. Always there is a scope of improvement. So any question, if you want to ask, please share. Participants, you can ask the question if you want to ask anything. इवनिंग मैम। Good evening. मैम मेरी क्वेरी है कि जैसे हमारी क्लास में हर तरह के स्टूडेंट आते हैं, मीडियोकर स्टूडेंट्स भी होते हैं और स्मार्ट स्टूडेंट्स भी होते हैं। Sure, sure. तो जैसे हम कोई इनोवेटिव टेक्निक से उनको पढ़ाते हैं तो कई बार स्मार्ट स्टूडेंट्स तो बहुत जल्दी समझ जाते हैं उस चीज को, लेकिन जो मीडियोकर स्टूडेंट होते हैं वो इतनी जल्दी ग्रास्प नहीं कर पाते उस चीज को। तो वो जो गैप होता है, उस गैप को कैसे हमें फिल करना चाहिए कि दोनों बच्चे जो हैं वो सेटिस्फाइड हो जाए हमसे एज अ टीचर। Gap will always remain there. It will remain there. It is there and it will remain there. So you have to motivate, just to give the counseling. Sometimes the students are very lethargic. They don't want to learn. They don't want to adapt the new things. Na, ऐसा होता है. So you have to motivate them कि you have to do, you can do. Just I'll tell you, I'm a professor of management. अब बच्चों को ऐसे कह देने से कई बार teachers, I'm not blaming anyone. I'm just giving one example. कि तुम नहीं कुछ कर सकते, इंस्टेड ऑफ सेइंग तुम नहीं कुछ कर सकते, अरे तुम कर सकते हो ना, यू कैन डू, एंड यू प्रिपेयर ए ग्रुप बना दीजिए। हमारे यहाँ ग्रुप बनाने का बड़ा कल्चर है। ग्रुप बना दीजिए, उस ग्रुप के अंदर 2 अच्छे रखिएगा, 2 मिडल मीडियोकर, 2 वीक स्टूडेंट्स डाल दीजिएगा, सो दैट दे विल स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम देयर पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप के साथ बच्चा बहुत जल्दी लगता है। टीचर कांट डू एनीथिंग। टीचर एक को तो लेके कर दे रहा, 30 स्टूडेंट, 60 स्टूडेंट, 100 स्टूडेंट इन ए क्लास। सो यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग द पीयर टीम, और जो पीयर टीम का मेंटर होगा, हेड होगा, वो हेल्प करेगा उनको लेटेस्ट पेडागोजीज के अंदर। बेटा थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। यस प्लीज। I think Amrita ma'am raised her hand twice. Amrita ma'am, you can ask your query. Amrita Dubey ma'am. Beena You can also Narayan write- ma'am is also there, ma'am. Beena Narayan ma'am is also there. Good evening, Usha ma'am. Can you hear me? Yeah, you are audible. I am able to hear you. I'm from Mumbai. I'm working as a senior professor in IES Management College, Mumbai, ma'am. I have a question. Actually, you were being very impressive, very, very wonderful, and we have really enriched with your knowledge. Thank you. Ma'am, quite often, I have come across with the students who are being very unethical. Cut copy practice is being very common, and in spite of repeated advices, ethical guidance, students are being not very ethical. And if it is the case of larger cities, then to what can be done? And this is, they have no ethical feelings, and sometimes they don't quote also. And when we put their projects and everything in Urkund like of the softwares, then they realize, but by the time it's very late. And often as a teacher, it has realized that, how to improve them, because, if it is just passing for the exam and clearing your project by doing some practices, that's fine. But I see in the longer sight manner that, if this unethical practice they are doing in the school, in the class level, and at their management education level, how much, I think in the corporate level also the same tendency will be maintained. So, since you are talking great with your experiences, can you suggest something innovative which I can, by which I can improve my students in future? Yeah, sure. Thank you.
unethical practices. Generally, what happens? These are unethical practices in the blood of the students. Even sometimes teacher, we should not blame only the students. कई बार ताली दोनों हाथों से भी बजती है. Even sometimes I'm not blaming all the teachers, but sometimes teachers are also unethical. So unethical is applicable to both. But we are particularly asking the question relating to the students' unethical practices they are following. What we have to do? Sometimes आप अपने स्टूडेंट्स के साथ प्लीज बी फ्रेंडली विद योर स्टूडेंट्स. आई विल गिव यू वन एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल. मेरे पास बच्चे एक दिन, एक मतलब केस स्टडी की ही बात कर रही हूँ, जस्ट लाइक ए केस स्टडी. स्टूडेंट आता है, लॉजिकली इफ दे सपोर्ट द थिंग्स, तो यू कैन एग्री विद देम. बट इफ दे आर इलॉजिकल, बिकॉज यू हैव ए लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस, तो आपको पता चल जाता है कि बच्चा इलॉजिकल, अनएथिकल है, तो आप उनको कैसे समझा सकते हैं. दैट शुड बी द राइट टाइम. आप बच्चों को डांटने डपटने की बजाय उन्हीं बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना शुरू कर दीजिए. हम तो ऐसे बच्चों को, गैंगस्टर्स जो होते हैं ना, उनको जिम्मेदारी की पोजीशन हमारे मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में उन्हीं को दे देते हैं कि टेलर हाउस तुम संभालोगे. एक्टिविटीज, डिफरेंट एक्टिविटीज आर गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन द डिपार्टमेंट, इन द स्कूल, इन आवर स्कूल. तो स्कूल में एक्टिविटीज का इंचार्ज ही उनको बना देते हैं. जब उनको आप जिम्मेदारियां देना शुरू कर देंगे, तो आई पर्सनली फील कि वो अनएथिकल प्रैक्टिस है टू सम एक्सटेंट, बिकॉज इनिशियली तो सिर्फ स्टार्ट ही होगा, एकदम से तो थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी चेंज्ड ओवरनाइट. जो बच्चों के ब्लड के अंदर चीज घुसी हुई है, उसको धीरे धीरे निकालिए. एकदम से ओवरनाइट एक्सपेक्ट मत करिए कि बच्चा चेंज हो जाएगा, एथिकल हो जाएगा. तो I'll tell you, जैसे हमारे पास कोई बच्चा आता है, एक केस स्टडी है, जैसे हम केस स्टडीज कैसे सोल्व करते हैं कि मैडम आज क्लास नहीं लगाएंगे. तो एकदम से मैंने कहा, आप देखेंगे कि दोनों ही आंसर सही है. मैंने कहा क्यों नहीं लगाओगे क्लास? Why there'll be no class today? You people are here, है ना? आप किस लिए आए हैं? यूनिवर्सिटी में इसीलिए आते हैं ना, पढ़ने के लिए. तो we are here your parents. पढ़ा समझाने का तरीका देखिएगा. We are here your guardians. We are here your parents. We have to take care of your studies. We have to take care of your association. हमें देखना है तुम्हारा. तो आप देखो कितना आपने एज ए टीचर उससे एसोसिएट कर दिया. बच्चे से आपने जुड़ाव दिखा दिया कि आप आपसे जुड़े हुए हो. आपकी एक दिन की क्लास मिस होगी तो आप कितना लॉस करोगे, पर आप इससे शो करिए कि you will be the loser as a teacher also. तो that create a लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप. और ये सब चीजें जो बेसिक्स है ना, यही चीजों के अंदर बच्चों में चेंज आती है. अब देखेंगे कि आपने उनको कहा नहीं, देयर विल बी ए क्लास होगी एंड यू हैव टू कम टू क्लास. अब आप देखेंगे दूसरी तरफ फिर बच्चे आए, 2 बच्चे मेरे पास, मैडम प्लीज आज क्लास नहीं होगी. अरे बेटा आज क्लास क्यों नहीं होगी? मैडम आज हैप्पी का बर्थडे है, आज मैडम रोज पढ़ाई करते हैं, आज आप भी आइएगा ना मैडम, बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, हम मार्केटिंग की बात भी कर लेंगे वहां थोड़ी थोड़ी. मैडम हमारा तो फाइनल ईयर का स्टूडेंट्स हैं, आउटगोइंग स्टूडेंट्स हैं, फिर पता नहीं आपके साथ कब बैठ पाएंगे, कुछ पर्सनल बातें करेंगे वगैरह वगैरह. एंड आई एग्रीड इमीडिएटली विद द स्टूडेंट कि ठीक है आज हम बैठेंगे, गॉसिपिंग करेंगे. तो यू जस्ट सी द क्वेश्चन वाज सेम. आज क्लास नहीं होगी, उस ग्रुप ने भी कहा, आज क्लास नहीं होगी, इस ग्रुप ने भी कहा, लेकिन वहां पर हम एग्री नहीं हुए, यहाँ हम एग्री हो गए. वहां जब हम एग्री नहीं हुए तो हमने क्या किया, एक एसोसिएशन, एक कंसर्न बच्चों के साथ दिखाई कि वी आर एसोसिएटेड विद यू, वी फील कंसर्न विद यू, यू आर हियर फॉर द स्टडीज, है ना, आपके हम पेरेंट्स हैं, आपके हम गार्जियन हैं. वहां हमने एकदम से कहा कि ठीक है आज बैठेंगे, मस्ती करेंगे. तो आपको देखो, कोई भी मॉडल, कोई भी एक स्टैंडर्ड रिप्लाई आज मैं आपको दूं, दैट इज नॉट एप्लीकेबल टू ऑल conflicts or all type of the problems, depending upon the nature of the problem. sometime एक मॉडल काम करता है तो sometime आपका दूसरा मॉडल काम करता है. तो आप ये देखें किस समय आपने कौन से मॉडल को अप्लाई करना है, ताकि बच्चे अनएथिकल ना होकर के एथिकली आए. बट डांट डपट के नहीं, आज का बच्चा डांट डपट से लाइन पे नहीं आने वाला है. यू हैव टू जज कि व्हाट टाइप ऑफ द अनएथिकल प्रैक्टिसेस दे हैव टू फॉलो. और ये स्टूडेंट किस टाइप का है, आप देखोगे कई बच्चे तो बड़ी डंडे की भाषा मानते हैं, कई बच्चे डंडे की भाषा नहीं मानते, पार की भाषा मानते हैं. तो यू हैव टू अप्लाई दैट, बिकॉज वन मॉडल इज नॉट एप्लीकेबल, वन मॉडल इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द ऑल प्रॉब्लम्स. सो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, यू हैव टू अप्लाई अकॉर्डिंगली. Thank you, ma'am.
Thank you, Usha ma'am. You are welcome. Always welcome. Every year, every session, we are having peculiar kind of students. So now your job is to try to understand the psychology of the student. Yes, I hope every teacher sitting here will agree to me that how much. Yeah. Thank you. But you must have the experience of long-term experience. Yes. How to judge the students as early as possible by giving the various type of the responsibilities, assignments. See, ma'am, actually, I will just take your half a minute again. Ma'am, actually, क्या हो रहा है by experience मैं क्या देख रही हूँ कि इतने सालों में हम क्या सीख रहे हैं कि हाँ स्टूडेंट्स का हमको पता चल जाता है कौन सच्चा है कौन झूठा है और वो बच्चा जो है वो आगे निकल जाता है वो शायद फिर से यही गलतियां जिंदगी में करेगा. So my concern is that making an ideal citizen is still question mark. नहीं ऐसा नहीं है. मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैडम थोड़ा सा डिफरेंट भी है. मैंने देखा है कि जो शैतान एलिमेंट्स हमारे यहाँ आते हैं वो मतलब नॉट 100% एप्लीकेबल बट सम ऑफ द शैतान एलिमेंट्स जिनके साथ जब हम पर्सनल रिलेशनशिप डेवलप कर देते हैं. इवन कुछ बच्चे हरियाणा के तो ऐसे आए जिनको इंग्लिश का ठीक से बोलना प्रोनाउंसिएशन वाज वेरी पुअर नहीं था, लेकिन जब वो निकले हैं तो टोटली ट्रांसफॉर्मेशन जिसको कहते हैं ना कि एंड दे आर वेरी सक्सेसफुल. तो ऐसा नहीं है. डिफरेंट एक्सपीरियंसेस आई एम आल्सो हैविंग कि इतना जबरदस्त. और आज भी वो बच्चे आते हैं और सैल्यूट करते जाते हैं. जब भी आते हैं दे कम टू द इंस्टीट्यूशन स्पेशली टू मीट में कि मैडम आपने हमें बदल दिया. तो समटाइम्स वी हैव टू टेक केयर देयर पर्सनली. कई बार उनकी पर्सनल कुछ दिक्कतें भी होती हैं, बेसिक्स होते हैं. बेसिक्स को चेंज करना इट्स वेरी डिफिकल्ट. जी जी जी, थैंक यू सो मच. Thank you, ma'am. I am from Imphal, Manipur. I am teaching mathematics in Oriental College. There are so many different students coming. Some are good mathematical knowledge and some are not good. So for this purpose, how I can develop the poor mathematical knowledge student. Abhi same question has been asked by the previous. Yeah. Especially for mathematics, if you have any suggestion. For that, I just tell you that you please constitute some groups. In particular group, you can have different levels of the students, slow learners, advanced learners, mediocres, etc. So that will be much better. कि student will learn from their peer team. Peer team से बच्चे जल्दी learn करते हैं. आपने देखा because we as a teacher all are facing the same problem. आज का बच्चा जितना व्हाट्सएप के ऊपर टाइम लगाता है, जितना मोबाइल पे लगाता है, क्लास में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता. क्लास में दे नॉट रेडी टू लिसन. बट इसके लिए ठीक है कुछ हद तक स्टूडेंट जिम्मेदार है, बट अप टू ए सर्टेन एक्सटेंट वी एज ए टीचर हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. वी हैव टू ओन द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें भी, मैंने अभी आपको बताया कुछ क्लास में ऐसा यूनिक कोई डिफरेंट extraordinary we have to deliver which they are not able to take from Google or any other source. आप एज ए टीचर हम अपने आप को इसको चैलेंज मानना है और चैलेंज एक्सेप्ट करना है कि हम अपने बच्चों को बेस्ट क्या दे दें. फॉर दैट वी हैव टू प्रिपेयर. अब ये नहीं कि 4 साल पहले जो हमने अपनी पीपीटी तैयार की थी वही 4 साल बोले जा रहे हैं. तो स्टूडेंट विल नॉट लिसन टू अस, दे विल नॉट कम टू आवर क्लास. वी हैव टू इवन चीज वही होगी बट वी हैव टू डिलीवर इट डिफरेंटली. अलग तरीके से करना है हमको वो. Thank you very much. You're welcome. Yes. Nari sir, you want to ask anything? Hello, am I audible? Yes, Madam. Yes, and I'm Shubhendu Bhandari from MIT Aurangabad. Actually, my query is regarding a multiple entry and exit. In that case, how can we construct a good timetable or teaching plan like things? Because if students can quit the program at different times and if they are eligible to enter at multiple points in between.
So Fine. there might be different prerequisites for different courses, but here, if somebody don't opt for some prerequisite courses and still they appear in some particular course, then how can it be possible? The timetable preparation, definitely it's a complex job. It's not so easy to prepare the timetable because it takes number of hours, and even when the teachers complain, मेरे को ये सूट नहीं करता, टीचर दूसरा कहता है मुझको ये सूट नहीं करता, and particularly बच्चों का भी जब clash होता है तो timetable, but if the students want to, क्योंकि हमको टाइम टेबल बनाने में कुछ limitations we have to follow and we have to face some limitation, और limitation हमारी सबसे बड़ी limitation होती है कि कई बार हमको restrict करना पड़ता है. अदरवाइज टाइम टेबल तो आप 12 घंटे का 24 घंटे का बना लोगे तब भी नहीं बन पाएगा. इफ यू गिव फुल फ्रीडम टू द स्टूडेंट कि दे कैन अडॉप्ट, दे कैन चूज एनी पेपर, इट्स नॉट पॉसिबल. लिमिटेशंस आर देयर कि अगर बच्चा फाइनेंस पढ़ता है तो उसको मार्केटिंग का माइनर सिर्फ यही लेना पड़ेगा. अगर वो कहे मैं तो कोई फाइनेंस का बच्चा एचआरएम पढ़ता है, कोई फाइनेंस का बच्चा मार्केटिंग पढ़ता है, कोई फाइनेंस का बच्चा बिजनेस एनालिटिक्स पढ़ता है, तो इट्स नॉट पॉसिबल. सो एवरी टाइम वी हैव सम कॉम्बिनेशंस ऑफ द पेपर कि इसके साथ करोगे तो इसकी ये लिस्ट है, इसके साथ ये करोगे तो ये लिस्ट है. यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट द स्टूडेंट, अदरवाइज तो आपके पास इतनी फैकल्टी भी कहाँ होती है. आप बताइए इतनी फैकल्टी कहाँ है कि आप बच्चों को सारे ऑप्शंस प्रोवाइड कराएंगे. इट्स नॉट पॉसिबल. दिस इज द लिमिटेशन. हाँ, ऑनलाइन एजुकेशन में इट मे हैपन, बट ऑफलाइन एजुकेशन के अंदर दिस इज अ बिग चैलेंज एंड लिमिटेशन दैट हैज नीड्स टू बी ओवरकम. Okay, and one more query, madam. In that case, how can we assure about the number of students enrolled and passed? What we are, for example, after few years, when NEP will be completely started, at that time, if we apply for the NAAC there, if we give some data that these many students are enrolled, and in the meantime, some of the students have quit already, they have quit, and maybe some more other students have already joined. So if it happens, so it is already yeah. changing. हाँ, yes, I agree with you. It happens so many times कि जब आपने SSR apply किया तो data was different. And when the peer team comes to visit, data is different. So you give the exact data when the peer team visits at that time during the presentation of your head of the institution. It happens there. Drop out भी हो जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं. It happens. Nothing to be worried. It happens. Okay. Thank you, madam. You're welcome. Thank you so much, ma'am. Thank It you. was highly engaging and enriching session for all of us. Thank you so much for sharing your expertise about key indicators and qualitative matrices of NAAC Criteria 1, Teaching, Learning and Evaluation, the role of educational institutions and teachers in providing quality education and making students more empowered. We are highly, highly obliged to have you with us. Thank you so much, ma'am. Thank you once again. Thank you. So nice of you. Thank you. Okay. We are also thankful to all the participants, management of Sant Hirdaram Girls College, our association partners, Research Foundation of India, and our sponsors, HERF, World Virtual Conference Forum, World Foundation of Science and Technology, UNEC, Transforming the Global Citizen by Zozo Education Academic. Thank you so much. We will be having the session on Criteria 3, Research Consultancy and Extension tomorrow at 5:30 p.m. So we all will meet tomorrow at the same time. Thank you so much. Thank you all. Okay, thank you. Thank you, ma'am. Very enriching. May I exit now? Yes, ma'am. Thank you so much. Okay.